Good morning students, this is Krishna Chauhan from PN Institute. Today I am once again back with a short trick to find out the magnetic property of any molecule. In the last video I have told you how to find out the bond order of any molecule. Today we are here with another short trick to find out the magnetic property of any molecule, to find out easily that whether it is a diamagnetic or it is a paramagnetic molecule. So before going with it, we will have a brief description, or we will have just a brief explanation that how to find out the magnetic property. See, in the molecule such as we are having two parts. One is the N2 and another is the O2 type of molecule. In the N2 type of molecule, how to fill up the electrons, that we know very well. First of all, we will go with the N2. How many electrons are there? Total we are having 14 electrons. How 14 electrons we will fill? We will do it a bit quick. हम इसे फटाफट करेंगे ताकि हम आगे का चीज आराम से we can understand. Okay, we are having 14 electron, 7 electron in each of the atomic orbital. Okay, 1 2 3 4 5 6 and 7. Same way in the another molecule, in the another atom of the nitrogen, we have 7 electrons. Okay, so from here in the atomic orbitals we will fill up the molecular orbitals. We are having 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, now how many total electrons are there? We are having 7 electrons, so we will fill up the 7 electrons. 1 2 3 4 5 6 and your 7. How many? Sorry, we are having how many? 6 electrons. 3 and 3 6, so we will fill up the 6 electrons. In this way we have filled the molecular orbitals of your N2. Now we will fill up in the O2. How many electrons are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Total we are having 16 electrons in the O2 molecule. Same way we will fill up the 8 electrons in the another O atom. From the atomic orbitals we will fill up the molecular orbitals in the same way. Total 4 plus 4 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, this is the main thing. Okay, so now what I want to tell you is regarding the electronic arrangement. You can see the basic difference between N2 and O2 is in N2 all the electrons in the molecular orbitals are your paired. वो कैसे है? सबके सब पेयर में है. ठीक है, हर एक में क्या है? You can see हर एक molecular orbital में दो दो electrons भरे हैं हमने, और कोई भी electron single नहीं है. Whereas in the O2 you can see that in the highest most, or you can say in the topmost orbital, here we can see in this one, this anti-bonding molecular orbital, we are having two अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कैसे है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और इस पूरे में इन ऑल दिस all the molecular orbitals you can see no unpaired electron is there. कोई भी unpaired electron नहीं है. We are having all of them as our paired electron, and in this two unpaired electrons are there. Because of these two unpaired electrons, इन दोनों unpaired electron की वजह से क्या होता है, अगर हमने O2 के molecule को magnetic field में रखा है, then it will show you deflection, and because of which these type of molecule are known as the paramagnetic. These are known as the paramagnetic molecules, whereas in this no such unpaired electrons are present, so they are not going to show you that much of high level of deflection in the magnetic moment, and they are known as your diamagnetic. They are known as your diamagnetic movement. Okay, these are diamagnetic molecules and these are known as the paramagnetic molecules. पर हम एग्जाम के टाइम पर हम इतने फटाफट ऐसे बड़े बड़े एमओटीज को उस टाइप पे ड्रॉ नहीं कर सकते. सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट टाइम वी आर हैविंग अ ट्रिक रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, दिस इज द ट्रिक फॉर दैट. ओके, इन द ट्रिक व्हाट इज द बेसिक थिंग वी शुड कीप इन माइंड इज, अगर मेरा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, इफ द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज इवन, देन दे आर डेफिनेटली योर डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल. वो कैसे होंगे आपके? दे विल बी हैविंग डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका ऑड आ रहा है, देन दे आर योर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स. दे आर योर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स. ओके,
But one thing is there, in chemistry there is definitely some exception is there. So same thing is there, exception is here with the boss. B stands for B2, O stands for O2, and S2 stands for your S2. How many electron is there in the B2? We are having 10 electrons. In O2 we are having 16 electrons, and in S2 we are having 32 electrons. अच्छा, तो हम from seeing the, हम आराम से इसको देख के बता सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कैसा होना चाहिए था, इट इज इवन, 16 इलेक्ट्रॉन्स इवन है, 32 इलेक्ट्रॉन्स इवन है. इन शॉर्ट सबके सब इवन होने के वजह से वी शुड कॉल देम एज अवर डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, बट बिकॉज बीइंग एक्सेप्शनल दे आर योर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल. दीज आर योर पैरामैग्नेटिक molecules. Okay, so this is the shortest trick I want to tell you. अगर सारे के सारे molecules के सारे जो भी molecule के electrons है उनको sum करके अगर आपका diamagnetic आ रहा है, मतलब even आ रहा है, तो कैसा है आपका diamagnetic molecule है. अगर उसका पूरा का पूरा sum करके आपके पास अगर odd आ रहा है तो कैसा है, they are your paramagnetic molecules. Whereas अगर तुम्हारे पास sum चाहे उसका even हो, but if the molecule is having 10, 16 or 32 electrons, still they are your paramagnetic molecules. Okay, keeping this thing in our mind, now we will solve few of the questions. Okay, once again just in a short trick I want to write here, even means dia, odd means para, and these are having 10, you are having 16 and they are having 32, still they are your paramagnetic. Okay, now applying this thing to the questions, we will solve few of the questions starting with the N2. Suppose नाइट्रोजन है, N2 प्लस दिया है, N2 माइनस दिया है, फटाफट इनका निकालना है. How to find out the magnetic moment quickly? How we can find out? We will just have the total electron count. These are the electron count of the molecules. N2 14, this is your dia. 13 ऑड नंबर है, क्या आएगा, पैरा. 15 ऑड नंबर है, पैरामैग्नेटिक. ओके, अनदर क्वेश्चन, सपोज यू आर हैविंग O2, वी आर हैविंग O2 प्लस, वी आर हैविंग O2 माइनस. फटाफट इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना है. इन सब में से तुम्हारा पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायमैग्नेटिक कौन सा है. वी आर हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन, इन दिस 15 इलेक्ट्रॉन, इन दिस वी आर हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन. ओके, O2 16 इलेक्ट्रॉन, दिस कम्स इन द एक्सेप्शनल. एक्सेप्शन में आ रहा है, चाहे इवन है, क्या लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक. इसमें और इसमें दोनों के दोनों कैसे है, ऑड है. ऑड है मतलब डेफिनेटली दे विल कम इन योर पैरामैग्नेटिक. ओके, अनदर मॉलिक्यूल वी कैन सी, इफ वी आर हैविंग HF, इफ दे आर गिविंग यू B2, तो ऐसे मॉलिक्यूल कैसा निकालता है, HF कितना होगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, 9 plus 1, we are having total 10 electrons. Here we are having another 10 electrons. Just now we have studied, if you are having 10 electrons, then they are your which kind of molecule, they are your paramagnetic. Exception में आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, we will write them as our paramagnetic. Same thing with the B2 also, 10 electrons, they are been coming in your paramagnetic. That's all. These are the shortest trick to find out the magnetic moment just from the electron count. आपके पास जो भी molecule दिया है सिर्फ इसका electron का count लीजिए, count लेके आप देख लीजिए. If they are having the even sum, they are diamagnetic. If they are having odd sum, they are your paramagnetic. But if the electron count being even, still it is 10, 16 or 32, then they are considered as your paramagnetic molecule. Okay, that's all. Thank you.